Assalamu alaikum students, you are watching my channel Zawar.Academy, a channel created for the students who want to learn science subjects or who want to prepare for their exams. So without any delay, we start our today's lecture, which is a very interesting topic of chemistry, the electrochemistry. When we talk about electrochemistry, it's a combination of two words, electro and chemistry. Electro has something to do with electricity. And when we talk about chemistry, it is the study of matter. Talking about its definition, it is that branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. Means sometimes electrical energy is converted into chemical energy and sometimes chemical energy is converted into electrical energy. So it is the interrelationship between the chemical and the electrical energy. The main concept which we study in electrochemistry are oxidation reduction reactions, जिनको हम redox reactions बोलते हैं. So again, when we talk about this term redox, it is a combination of two words, RED for reduction and OX for oxidation. We can define the oxidation reduction reactions in four ways. First, gain of oxygen. As you can see in the example, carbon is gaining oxygen to form carbon dioxide, which means that carbon is undergoing oxidation as it is accepting or it is gaining oxygen. When we talk about reduction, it is the loss of oxygen, which means that here you can see in the example, ferric oxide. It combines with carbon monoxide to form pure iron and carbon dioxide. Ferric oxide से iron तक को देखें तो we can clearly see here it is losing oxygen, which means that it is reduction. Secondly, it is the loss of hydrogen. Oxidation is how इधर methane को आप देख रहे हैं, it is combining with oxygen to form carbon dioxide and water plus heat, which means it's a combustion reaction. ठीक है, मीथेन यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है इधर कार्बन डाइऑक्साइड में, which means that it is losing hydrogen here, which means there is oxidation. On the other side, gain of hydrogen is reduction. Here nitrogen is combining with hydrogen to form ammonia, which means that nitrogen is accepting or gaining hydrogen here, which means that it is reduction. Third thing is loss of electron, is oxidation. Calcium को clearly आप देख रहे हो, it is losing 2 electrons to form calcium cation, which means it is oxidation. Chlorine को देख लीजिए, the opposite of that is reduction ना, तो chlorine is here gaining electron, so it means it is a reduction process. One thing जो आपको याद रखनी पड़ेगी, you have to memorize this, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे in this chapter electrochemical cells, तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखनी पड़ेगी कि whenever we talk about the anode, ठीक है, the word anode, तो हमें पता चल जाएगा कि in electrochemical cells oxidation takes place at this anode, and when we talk about the cathode, it means that reduction takes place at cathode in electrochemical cells. So we will study now these 4 points in a bit more detail. So starting with our first heading, which is oxidation reduction in terms of oxygen and hydrogen का gain or loss. ठीक है, जैसा कि हमने इसमें देखा था the first 2 points. ठीक है, starting with the iron purification process, a reaction is written here in which Fe2O3, which is ferric oxide या iron 3 oxide भी इसको बोलते हैं, it is combining with carbon monoxide to form iron and carbon dioxide. What does this means? कि यहाँ पर ये आयरन है which is actually 2,3, जैसे कि पहले भी हमने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि it is actually converting its pure form, ठीक है, then here to here. हम clearly इसको देख के ये बोल सकते हैं कि ये reduction का process है as removal of oxygen हो रही है, and this is the process of oxidation as it is gaining oxygen. Talking about iron, तो ये एक moderately reactive metal है, which means that it readily combines with any non-metal in the environment. जैसे कि इस केस में ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी it does not exist in its pure form in the earth crust, so it readily combines with any non-metal, so it combines here with the oxygen. So the first step in the purification process is the removal of oxygen from iron ore, which is Fe2O3, ठीक है, and that removal is carried out by which is who is responsible for doing this? It's carbon monoxide. Carbon monoxide here removes the
oxygen. And again, carbon monoxide here combines with oxygen to form carbon dioxide, which means here oxidation हो रही है. We will talk about the second, the oxidation reduction in terms of loss or gain of electron, जैसे कि हमने इस third point में बात की थी. When we talk about the group 1a and 2a elements, so they lose 1 or 2 electrons to form cations. Cations are क्या होते हैं भाई? They are positively charged ions. ठीक है, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं सोडियम है, it loses 1 electron to form sodium ion. ठीक है, it means it's oxidation. Calcium है, it loses 2 electrons. Group 2a में से है ना calcium. That's why. And sodium is from 1a. Second thing जो आपको इसमें याद रखनी है, and you have to remember this is the group 6a and 7a, they gain 1 or 2 electrons to form the anions. Negatively charged ions are called anions. ठीक है, इस केस में आप देख रहे हो कि chlorine is actually gaining 1 electron to form chlorine anion, and oxygen always takes 2 electrons with some exceptions जो कि हम आगे पढ़ेंगे. It forms this anion -2. Okay, now जैसे कि हमने इसका fourth point पढ़ा था, the oxidation number. ठीक है, now our third topic here is the oxidation number, the oxidation state. What is oxidation number? Starting with its definition, number of charges an atom will have in a molecule or compound. ठीक है, जैसे for example sodium. ठीक है, it's a simple element. When you talk about its oxidation number, sodium cation, sorry, तो it's +1. ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि फाइंड और मुझे बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO2 रैंडमली, ऑक्सीजन का आप तो सिंपल और इजीली बता दोगे, इट्स -2. व्हाट अबाउट कार्बन? सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर. There are certain rules for assigning the oxidation state or number, starting with the one, the oxidation number of elements in free state is 0. एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं जिंक है, सोडियम है, और भी मेटल्स हमारे पास आ जाते हैं, नॉन मेटल्स. ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में जब है तो दे हैव दैट ऑक्सीडेशन नंबर 0. ऑल्सो H in H2 and S in S8. Second point is oxidation number of an ion consisting of a single element is same as charge on ion. जैसे मैंने सोडियम का बताया इन द प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया. पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ठीक है, दे हैव these oxidation states +1, +2, +3. Third is in ions the algebraic sum of oxidation number equals charge on ion. अच्छा, इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. हेयर हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास CO3 -2 which is a carbonate. ठीक है, यहाँ पर we know the oxidation state of oxygen, it is known, which means it is -2, but the oxidation state of carbon is unknown. इसको हम लिया x कर दिया suppose. ठीक है, x plus -2 into 3. ठीक है, it's 6, and when we solve all this +4 आया. But the main thing is यहाँ पर the algebraic sum जो है ना of oxidation number equals charge on ion which is -2. ठीक है, we take all this equals to not 0. Why? Because oxidation number equals charge on ion. जैसे कि हमने बात की, it's -2. So we have this. Now there is a quick quiz for you to find the oxidation state of sulfur in SO4 -2. Take a minute and solve this problem. Point is, in neutral molecule, the algebraic sum of oxidation state or oxidation number of elements is equal to 0. इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. KMnO4 which is potassium permanganate. इसमें हम पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को जानते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है हमें, बट वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज. सो हम सिंपली उसको इस तरह से लिख लेते हैं. वी सपोज इट x, और दिस इज +1 एंड दिस इज -2 into 4. वी टेक्स दिस इक्वल टू 0. हमने इसको सॉल्व किया एंड व्हाट इज द आंसर? इट्स +7. व्हाट डज दिस मीन्स? here this 0 is important, and this formula must be equal to 0 because here it's the neutral compound, doesn't have any charge, as we are discussing in the previous example.
यहाँ पर हमारे पास -2 चार्ज था, ठीक है। नाउ देयर सर्टन कीज और जनरल रूल्स, अगर आप इनको याद रखते हो कि यू कैन ईजिली सॉल्व दी प्रॉब्लम जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज +1, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 है, इट्स +2। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोजन जो है इट्स +1, ठीक है, एंड वी नो दैट। लेकिन हाइड्रोजन विद मेटल और बोरॉन इज -1, ठीक है। देयर इज वन एक्सेप्शन मीन्स, ठीक है, Na+ H-, Mg+2 and H-1. So here the oxidation state of the hydrogen is -1 if it's with metal or boron. Fourth thing, the same. If it's with the non-metal, it's +1. Oxygen in all compound is -2 except in H2O2 or with fluorine. जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं peroxide H2O2 it's -1. Oxygen is -1. H2O2 it's -1. You can solve this and it's equal to 0. आप आराम से देख सकते हो. In superoxide it's +2. इसी तरीके से सॉल्व करके and जैसा कि superoxide with fluorine OF2, the thing is solved here. So these 7 points आपने mind में रख रहे, you can easily solve any problem related to this topic, ठीक है। Our topic, fourth topic is oxidizing and reducing agents. Starting with the oxidizing agents. An oxidizing agent is the reactant containing the element that is reduced. Definition तो हमने देख ली, clearly हम इसको समझ सकते हैं through its example. Here you can see the entity A is giving the electrons, or it is losing electron and giving its electron to entity B, which means B is reduced here, ठीक है। The entity or the element that is reduced is an oxidizing agent. How? इसकी एक की है, यानी an oxidizing agent make oxidation happen by taking the electrons away, ठीक है। They actually क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन को पॉसिबल करवाते हैं by gaining electron, ठीक है। If they do not gain those electrons, ठीक है, how come कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। So it is that oxidizing agent जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन को पॉसिबल कराता है, ठीक है। The thing that is reduced is oxidizing agent, ठीक है। I hope आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। The second thing is reducing agent. A reducing agent is the reactant containing the element that is oxidized. अच्छा, इसी तरीके से एग्जाम्पल पे आ जाइए। एंटिटी A है, it is giving its electron to entity B, ठीक है। Here this entity is undergoing oxidation, means it's losing electron, ठीक है। It is a reducing agent, ठीक है। वही की इसके लिए भी है कि reducing agents make reduction happens by giving electrons away. By giving electrons away, it makes the reduction happen. अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इस एंटिटी बी को ना दे तो रिडक्शन कैसे होगी? सो इट इज़ दैट एलिमेंट और दैट एजेंट जो कि यहाँ पर रिडक्शन को पॉसिबल कराता है। सो दैट्स वाई हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ओके। द थिंग दैट इज ऑक्सीडाइज इज रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, व्हाट आर दे? They are the devices that convert chemical energy into electrical energy, or devices that convert electrical energy into chemical energy. Two terms are very important when we talk about the electrochemical cells: the spontaneous reactions and the non-spontaneous reactions. Talking about the spontaneous reaction, what are they? They are those reactions which happen on their own and they do not need any energy or any external source of energy, ठीक है। एंड दे आर दोज रिएक्शंस जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को गिव्स फ्री एनर्जी। सो सिंपली यू कैन से कि द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रिलीजेस एनर्जी। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, दे डू नॉट हैपन ऑन देयर ओन, दे नीड सम एनर्जी ताकि
ये रिएक्शंस का होना पॉसिबल हो सके, ठीक है. सो द एनर्जी विच इज एक्चुअली रिलीज इन दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इट इज यूटिलाइज्ड इन द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. Electrochemical cells are of two types, electrolytic cells and galvanic cells. Now we will study the details of these two cells. Talking about galvanic cell, what is the galvanic cell? It is a device that uses the chemical reaction to create electricity. A device, I forgot to write the definition here, it is the device that uses the chemical reaction to create electricity. What does this mean? ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ करती है केमिकल रिएक्शन को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसी कौन सी सिचुएशन अभी हमने देखी जहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वेरी गुड. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या हैं? दे आर दोज रिएक्शंस दैट क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी और दैट क्रिएट एनर्जी, ठीक है. सो एज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट एक्चुअली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम गैल्वेनिक सेल में देखेंगे. We have two containers here, one containing the zinc sulfate solution, the other containing the copper sulfate solution. ठीक है. We have two electrodes here. Two electrodes हैं हमारे पास, ठीक है. Zinc electrode is dipped in zinc sulfate solution and copper electrode is dipped in copper sulfate solution. ठीक है. Now, what is actually happening inside? यहाँ पर जिंक सल्फेट की बात हमने की तो इट इज़ एक्चुअली, हम यहाँ देख रहे हैं कि डिवाइड हुआ है इनटू इट्स आयंस, यानी SO4 नेगेटिव एंड Zn+2, ठीक है. और इसी तरह सिमिलरली इन दिस कंटेनर Cu पॉजिटिव 2 एंड SO4 नेगेटिव 2, ठीक है. सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि जिंक लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है. व्हाई नॉट कॉपर? बिकॉज जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, ठीक है. सो इट एक्चुअली लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन. जिंक लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इट फॉर्म्स? Zn+2. आफ्टर लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट फॉर्म्स दिस वन, ठीक है. दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द एक्सटर्नल वायर, ठीक है, एंड दे रीचेज the electrode, copper electrode, and these electrons, ठीक है, they are taken up by the copper ions which are present in the solution, and what they form? This neutral copper, ठीक है. I write, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 electrons हैं, ठीक है. Why 2 electrons? Because zinc 2 electrons lose करेगा and copper 2 electrons gain करेगा. That's why I write 2 here. सो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा एंड इस फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाएगा. Zn+2 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 आफ्टर लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इट्स बिल्ट अप हियर. एंड वी टॉक अबाउट दिस कंटेनर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर आयंस दे आर एक्चुअली गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, लेते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके वहाँ से आते हैं, लेते जाते हैं और इस फॉर्म में Cu की फॉर्म में आ रहे हैं, विच मीन्स दैट दिस नेगेटिव चार्ज इज बिल्ट अप हियर. टू नॉर्मलाइज दिस सिचुएशन, what comes in? The salt bridge. We use the salt bridge to normalize the situation. Salt bridge actually contains the salt, as its name indicate. Sometimes NaCl, sometimes KCl, ठीक है. एंड वी यूज़ कॉटन प्लग्स हेयर सो दैट कि जो सोल्यूशन हमने इसमें यूज़ किया है KCl का NaCl का, दे एक्चुअली यहाँ पर पोर ना हो, ठीक है. ग्रेजुअली ये जो है इसके अंदर एंटर होता जाए, ठीक है. सो टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, नेगेटिव आयन जो कि Cl नेगेटिव है, दे मूव इन दिस कंटेनर एज पॉजिटिव चार्ज यहाँ बिल्टअप हुआ है जिंक की वजह से, एंड द पॉजिटिव पोटेशियम move in this container as negative charge यहाँ पर built up हो गया, ठीक है. So we call this one as the oxidation half reaction and this one as the reduction half reaction, ठीक है. As मैंने पहले भी आपको बताया था कि whenever we talk about anode, oxidation होगी, and whenever we talk about cathode, वहाँ पर reduction होगी. So this is the reaction which is actually taking place at anode. At anode, zinc is losing its 2 electrons,
ऑक्सीडेशन हो रही है. एट कैथोड कॉपर इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन हो रही है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. समरी पे आ जाते हैं. जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन कॉपर. ठीक है. सो क्या होगा कि जिंक एटम जो न्यूट्रल जिंक है, जो कि इलेक्ट्रोड पे हमारे पास प्रेजेंट है, वो leaving its electron on the electrode, ठीक है, move into the solution in the form of Zn+2. ठीक है. And that electron वो travel करके आएंगे towards this copper electrode. Copper ion जो कि present है in CuSO4 solution, they capture electrons, ठीक है, from this electrode. ठीक है. And what they form the neutral Cu, as you can see here. ठीक है. So this is the reaction. जब हम इस reaction की बात करते हैं, ठीक है, which is between this zinc and copper, this is a spontaneous reaction, and as this is a spontaneous reaction, it generates electricity. Okay, so galvanic cells are those devices that uses the chemical reactions, the spontaneous chemical reactions, to create or generate electricity. Now, what is an electrolytic cell? Electrolytic cell is the opposite of galvanic cell. Talking about its definition, they are the cells in which electrical energy is used to drive a chemical reaction. Whenever we talk about energy is used to drive a chemical reaction, हमें पता चल जाता है कि ये non-spontaneous reaction की बात हो रही है. The reaction that wouldn't happen until unless हम उसको energy provide ना कर दें. Cells, we study the process of electrolysis. What is electrolysis? It's a process where electricity is used to drive a chemical reaction, or it is used to make the chemical reaction happen that wouldn't happen otherwise. Example, or in this cell, we take the solution, NaCl solution, okay? And we take 2 electrodes and we connect these electrodes with the terminal of the battery, okay? We connect this electrode with the positive terminal of the battery and this electrode with the negative terminal of the battery. Okay, NaCl, it's broken into its ions. Na is positive and Cl negative. We heat the solution to make this happen. Ions are attracted towards that electrode which is connected with the negative terminal of the battery, and the negative ions, इनको chlorine ions हम बोलेंगे, they are attracted towards this electrode because it is connected to the positive terminal of the battery. So हमने हमेशा पढ़ा कि anode पे oxidation takes place and cathode पे reduction takes place. Anode oxidation, cathode reduction. So here ये reaction हो रहा है कि 2 chlorine, they are actually forming this. अच्छा, इसको समझते हैं. This chlorine ion, it is attracted towards this electrode. वैसे it is very stable in this form, यानी it does not want to lose its electron. This battery pulls the electrons from that chlorine. ठीक है. So as it pulls the electron, तो ये convert हो जाएगा अपने neutral form में. Battery is pulling the electron. ये जो chlorine ion है, it is converting into its neutral form. ठीक है. So this reaction is actually happening here. Electrons move करेंगे from this battery इधर. Electrons pull the battery pulls the electrons, ठीक है, and pushes it towards this electrode where sodium is waiting for the electrons. As sodium is attracted towards this electrode, it gains the electron from which is, traveling through this wire, and it forms this neutral sodium. It means that reduction happens here. This is the process of reduction which is taking place here. Na gains electrons. They are pushed by battery towards cathode. Okay, this is cathode, this is anode. So this is the process overall जो कि मैंने लिखा हुआ है कि sodium actually NaCl, ठीक है, it's formed NaNCl2. Cl negative to 0 जा रहा है, it means increase in oxidation number. It means lose करेगा electron, oxidation happens here. Cl जो है वो reduction होगी because it's gain electron. Simple. So what happens कि non-spontaneous reaction है जो कि होता है with the help of the electricity. ठीक है. This is not possible without this battery. ठीक है. If this external energy source, electrical energy source is not there, how come कि ये reaction हो सकेगा? नहीं हो सकेगा. It's not possible. For that हम use करते हैं battery so that electrons जो कि release हो, they are pulled towards this and यहाँ पर आ जाएं and gain कर ले उनको sodium and convert हो जाएगा इस form में. So this is the whole process which is
These are generally all the topics which we study in electrochemistry.